Very good morning, students. I hope you all are good and doing good, great in your studies. So today we are going to start our chapter 4, which is tiny animals. इस chapter के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में about the animals or insects which are very small or tiny. So let's discuss them in chapter. The name of our chapter is Tiny Animals, and the topics which we will study here are insects. Insects can be harmful, worms, spiders, and useful insects. So, firstly, we need to understand about insects. Insects are very tiny animals. They can be found crawling and flying everywhere in the soil, in water, on plants, and in the air. They have the following features. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हर जगह मोस्टली कहीं ना कहीं पे हमें दिख ही जाते हैं एंड दे हैव सर्टेन फीचर्स विच आर इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होते हैं. इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स कॉल्ड एंटने. इंसेक्ट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज विद नो बोन्स. इंसेक्ट्स की कोई भी बोन्स नहीं होती, दे जस्ट हैव देयर सॉफ्ट बॉडी. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे फ्लाइज, उनके पास 2 विंग्स भी होते हैं, while some like dragonflies, beetles and bees have 4 wings. Insects like butterflies and mosquitoes do not crawl, they only fly. Insects like cockroaches, beetles, wasps and houseflies can crawl and fly both. Insects have special features in their mouth to help them obtain their food. A butterfly sucks nectar using its tube-like mouth. A mosquito sucks blood with its needle-like mouth. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एक उनका जो माउथ होता है वो इस तरीके से ही प्रेजेंट होता है कि वो अपने फूड को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं इन अ सर्टेन मैनर. Insects hide to protect themselves from enemies like lizard, frog and birds. They hide in nooks and corners, cracks in walls, tree trunks, and holes in the ground. Do you know a queen bee can lay as many as 1500 eggs a day? Insects can be harmful. जो insects होते हैं वो हमारे लिए harmful भी consider हो सकते हैं because some insects can be harmful to us like mosquito bite spread diseases like malaria and dengue. Houseflies sit on garbage and carry germs and dirt on their legs. Afterward, when they sit and open uncovered food item, they leave the germ on the food and contaminate the food. यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठ के आए होते हैं और जब वो हमारे फूड के ऊपर बैठते हैं तो वो उन जर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द फूड और हमारे फूड को खराब कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं. इफ वी ईट दिस फूड, अगर हमने इस फूड को कंज्यूम किया तो इट कैन कॉज डिजीजेस जैसे कॉलरा, dysentery and typhoid. Locusts eat fully grown crops and damage them. Bugs, wasps or fleas bite us. This can cause itching and redness of the skin. Termites feed on wood and damage furniture, doors and other wooden items. Worms क्या होते हैं? Worms are tiny animals with long tube-like bodies. They help them to move. यानी कि worms जो होते हैं वो भी tiny animals ही होते हैं. उनकी एक long structural body होती है जो उनको crawl करने में या फिर move करने में मदद करती है. They cannot fly. They can only creep and crawl. Caterpillars, centipede and millipedes are worms that have many legs. Caterpillar are the young ones of butterflies. Caterpillar कौन होता है? Butterfly के young ones. They feed on green leaves and live on plants. Now, spiders. Spiders are another type of tiny animals. Spiders भी एक tiny animal की category में आते हैं, but they are not insects. Spider को हम as an insect consider नहीं करते. They have 8 legs, while जो insects होते हैं उनके पास 6 legs होते हैं. Their body is divided into 4 parts, whereas insect की जो body होती है वो 3 parts में divided होती है. They spin webs to catch insect. वो क्या करते हैं? webs को spin करते हैं ताकि वो insect को catch कर सके और उनको खा सके. A spider spin it web with a special liquid. जो spider होता है वो एक special liquid से अपने web को spin करता है. That becomes a thin and strong thread. जो एक thin और strong thread में convert हो जाता है. What are useful insects? ऐसे कौन से insects हैं जो हमारे लिए useful हैं? We get silk from cocoon of the silkworm. इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बीज, वो हमारे लिए हनी बनाते हैं विद द नेक्टर दे सक फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स.
We use honey for many purposes. Butterflies, bumblebees and some other insect help करते हैं transfer में of pollen grains from one flower to another. This is your cocoon, honeybee and butterfly. And in your grocery, suck means to pull a liquid into the mouth. Obtain means to get something. Soft means smooth and pleasant to touch. And crawl means to move slowly with the body on the ground. Let's review the chapter. Insects are very tiny animals. Locusts eat fully grown crops and damage them. Caterpillars are the young ones of butterflies. We get silk from cocoon of the silkworm. Let's finish the exercise. First is tick the correct option. Dash are very tiny animals, insects. A dash sucks blood with its needle-like mouth, mosquito. Dash cannot fly, worms. We get silk from the dash of the silkworm, cocoon. Fill in the blanks. Insects have soft bodies with no bones. The next is a dash sucks nectar using its tube-like mouth. It is butterfly. Dash bodies is divided into three parts: head, thorax and abdomen. Insects. Insects have 6 legs. True, false. Worms are tiny animals with long tube-like bodies that help them move. True. Insects have 5 bones in their body. False. Insects hide in nooks and corners to protect themselves. True. Caterpillars are the young ones of butterflies. True. So students, this was your chapter about tiny animals. I hope the chapter is clear to you. Do revise and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.